Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Waqas Rafiq with my YouTube channel Waqas English Academy. How are you friends? कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक हो गए अपने घर वालों के साथ। फ्रेंड्स, ये हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था about active and passive voice, in which we learned the basic rules of changing an active voice into passive voice. Some of them were left and today we are going to complete them all. उनमें से कुछ रह गए थे। हमने जो सीखे थे कि हम वो कौन से रूल्स है जो अपनाते हैं एक एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए। तो वो हमने सीखे थे। जिन्होंने वो टॉपिक हमारा नहीं सुना या देखा, वो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो वहाँ से विजिट कर सकते हैं। और आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो केसेस हैं जहाँ पे हम एक एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले ऐसा केस है कि जहाँ पे हम एक एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। ये टोटल है हमारे पास 8 केसेस। सो दोज कंडीशंस वेयर अ सेंटेंस बिकम्स इंट्रांजिटिव, वो कौन सी है कंडीशंस? जो सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकता है उसे हम कहते हैं इंट्रांजिटिव सेंटेंस। ठीक है, तो वो कौन सी कंडीशन है? देयर आर टोटल 8 कंडीशंस which we are going to learn them one by one. So the first is in front of you when object is not present. जब हमारे पास सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ना हो, ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो, तो वो सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकता। जैसे आप देख सकते हैं, दे प्ले, शी राइट्स। अब इसमें पहले सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे दे प्ले, वो क्या खेलते हैं, ऑब्जेक्ट इज मिसिंग, देयरफॉर दिस सेंटेंस इज नॉट चेंजेबल इनटू पैसिव वॉइस। एंड द सेकंड सेंटेंस, शी राइट्स, वो लिखती है, क्या लिखती है, ऑब्जेक्ट इज मिसिंग हियर, so this sentence is also not changeable. And the second rule, second case, when object is adverb of time, जब object हमें क्या करे, adverb of time शो करे, यानी कि वक्त को शो करे। जैसे I will teach tomorrow, I will teach tomorrow। अब tomorrow यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट में adverb of time है, एडवर्ब ऑफ टाइम शो कर रहा है, यानी कि टाइम शो कर रहा है कि भाई कल क्या काम किया जाएगा पढ़ाने का। तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारे पास वो नहीं है जो होना चाहिए, लेकिन हमारे पास टाइम है, तो इस वजह से ये चेंज नहीं हो सकता। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है, ही वर्कड यस्टरडे, उसने कल काम किया था, लेकिन क्या काम किया था वो हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो इस वजह से ये भी हमारे पास चेंज नहीं हो सकता। हाँ, अगर हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल ऑब्जेक्ट होता, जैसे इंग्लिश, सपोज आई विल टीच इंग्लिश, so this sentence could be changed into passive voice, like English will be taught by me tomorrow। ठीक है, तो लेकिन हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि हमारे पास है एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये चेंज नहीं हो सकता। फिर हम आते हैं तीसरे केस की तरफ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि जब हमें ऑब्जेक्ट किसी काम करने का मैनर यानी कि तरीका बताए कि कोई काम किया जाता है तो वो किस तरीके से किया जाता है। जैसे आपके सामने लिखे हुए हैं एग्जाम्पल्स, ताहिर स्पीक्स स्लोली। अब ताहिर स्पीक्स स्लोली, अब स्लोली इज द एडवर्ब ऑफ मैनर, तो ये हमें बता रहा है ताहिर के बात करने का अंदाज कि वो किस तरह बात करता है, तो ये भी चेंज नहीं हो सकता। दे ड्राइव बैडली, वो बुरी तरह से गाड़ी वगैरह चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, तो इसमें भी हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर आ रहा है, तो ये भी हमारे पास चेंज नहीं हो सकता पैसिव वॉइस में। नंबर 4, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या हो, किसी प्लेस को शो करे, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जैसे पीपल वर्क देयर, अब देयर इज शोइंग अ प्लेस। ठीक है,
शी टीचेस हेयर, वो यहाँ पढ़ाती है। पीपल वर्क देयर, लोग वहाँ काम करते हैं। इसी तरह एडवर्ब ऑफ प्लेस कैन बी एनीथिंग लाइक ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एटसेट्रा। तो ये भी हमारे पास चेंज नहीं हो सकते। अब हम आते हैं फिफ्थ नंबर पे, व्हेन वर्ब शोज पोजीशन, यानी कि जब हम वर्ब हमें किसी चीज की पोजीशन यानी कि मलकियत को शो करता है। एग्जाम्पल, आई हैव अ मोबाइल, दे हैड अ कार। In my these two examples, have and had are showing possession. They are the verbs, but they are showing possession, ownership they are showing. तो ये भी हमारे पास चेंज नहीं हो सकते. It means if someone says you to change this sentence into passive voice, like I have a mobile, change into passive voice, so this cannot be changed. Okay. So sixth one is when verb is traveling. जब verb क्या करे, सफर कर रहा हो. Example, we go for a walk. We go for walk, हम चहलकदमी के लिए जाते हैं. She runs towards her car. Now here we can see that in the first sentence go and in the second sentence runs, they are showing traveling. So uh, this is also the condition where we cannot change an active voice into passive voice. And the second last, seventh condition is that when verb shows status, like for example, I am a teacher, they were students. Now here the verb means the helping verb, am and were are showing the status. Like I am a teacher, so this sentence cannot be changed into passive voice also. And they were students, वो तालिब इल्म थे, ये भी हमारे पास चेंज नहीं हो सकता पैसिव वॉइस में. And the eighth condition is when verb is like sleep, cry, weep, think, breathe, right? ये वो कंडीशन है, वो वर्ब्स है जहाँ पे एक नेचुरल एक फैक्ट शो होता है, एक कुदरती एक अमल शो किया जा रहा है, लाइक स्लीप, क्राई, वीप एंड थिंक, राइट? तो इसमें हम ये चेंज नहीं कर सकते. अगर कोई हमें कहता है कि लाइक आई थिंक, मैं सोचता हूँ, सो this is also not changeable, right? He's weeping, he is weeping, this is also not changeable into passive voice. So these are the basic 8 conditions which we cannot change into passive voice. अब इन conditions को याद रखने के लिए आपको practice करनी होगी, and you have to memorize them and also learn them by heart. और कि आपको ये जुबानी याद करने होंगे. And if you find out any sentence which is falling any one of these categories or any case of these which we have taught you right now, so you can easily understand that this sentence is proving that in this category of the cases, so you can easily understand कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते. Means for example, if you are attempting anything kind of the test or entry test or whatever, or you are writing a normal letter or whatever, so if any sentence comes in front of you where you are confused, so you can easily memorize them and also recall these cases and apply them and think first with a common sense कि पहले आप इनको चेक करें, जो भी आपके पास सेंटेंस आ जाए उसको पहले चेक करें कि जो 7 8 कंडीशंस है इनमें से किसी एक भी उतर रहा है तो आपका सेंटेंस चेंज नहीं होगा. Many people say that intransitive sentences can be changed temporarily, but we are not talking here illogical things about, but we have to prove the things with the logical sense, right? So now we have completed our rules and regulations of changing an active voice into passive voice. Now we are coming towards the practice of the tenses. So the first is the present indefinite. अब हमने जैसे कि rules सारे सीख लिए हैं कि एक एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए कौन से रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, वो हमने सब सीख लिया है. ठीक है. सो नाउ अब जो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे,
वो है हमारे पास पहला टेंस, द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एंड एज वी नो दैट देयर आर इन टोटल वी हैव 12 टेंसेस बट ओनली 8 ऑफ देम आर चेंजेबल इनटू पैसिव वॉइस। 12 टेंसेस है हमारे पास टोटल, लेकिन उनमें से 8 टेंसेस ऐसे हैं जो चेंज किए जा सकते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में, जिनमें से नंबर 1 है आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट वी कम टुवर्ड्स द अफर्मेटिव सेंटेंसेस, active voice. The formula is subject plus first form of the verb plus es, iess plus object. Example, they use mobile. Said flies the kite. The passive voice formula is object plus helping verb plus third form of the verb plus by plus subject. Example, mobile is used by them. Kite is flown by Said. As we have learned that subject takes the place of the object and object takes place of the subject. Subject takes place of the object and object takes place of the subject. जब हमने ये रूल सीखा था कि जब एक एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाता है, तो इसलिए फार्मूला भी फिर हमने उसी हिसाब से बनाना है। नाउ हियर मे बी द कंफ्यूजन कि भाई सबसे पहले तो हमारे पास सब्जेक्ट आते हैं तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है। तो ये तो एक लॉजिकल बात है कि जब रूल में हमने सीखा था कि भाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा पैसिव वॉइस में और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है, तो ऊपर एक्टिव वॉइस में जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो नीचे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, यानी कि तो इस वजह से हमने पहले ऑब्जेक्ट को लेके आना है, फिर उसके बाद हमने दूसरा पैटर्न फॉलो करना है। इस तरह से आप मजीद सेंटेंसेस बना सकते हैं फॉर योर प्रैक्टिस। नाउ वी कम टुवर्ड्स द नेगेटिव सेंटेंसेस, एक्टिव वॉइस। फर्स्ट formula is subject plus helping verb plus not plus first form of the verb plus object. Example, they do not use mobile. वो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते हैं। Said does not fly the kite. Said पतंग नहीं उड़ाता है। Passive voice formula is object plus helping verb plus not plus third form of the verb plus by plus subject. Example, mobile is not used by them. Kite is not flown by Said. In the very same way, interrogative sentences, active voice formula is helping verb plus subject plus first form of the verb plus object plus question mark. Example, do they use mobile? Does Said fly the kite? Passive voice formula is helping verb, object plus third form of the verb plus by plus subject plus question mark. Example, is mobile used by them? Is kite flown by Said? And keep the one thing in your mind that the pattern of changing a simple sentence into negative or interrogative is the same pattern which we follow in simple sentence in active voice will be the same pattern in the passive voice. Passive voice में भी वही pattern होगा और active voice में भी वही pattern होगा. Means if in active voice in the simple sentence we are bringing the first helping verb at the beginning of the sentence and after that subject we are bringing. In the very same way, in a passive voice in interrogative sentences, first we shall bring the helping verb and then object, and at the end of sentence we shall put the question mark, right? So do not confuse yourself in these confusions. Active voice in negative interrogative sentences, formal. Formula is helping verb plus subject plus not plus first form of the verb plus plus object plus क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, डू दे नॉट यूज मोबाइल, क्या वो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते हैं। डज सईद नॉट फ्लाई द काइट, क्या सईद पतंग नहीं उड़ाता है। एंड द पैसिव वॉइस फार्मूला इज हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, is mobile not used by them, is the kite not flown by Said. And the last one is negative interrogative sentences, informal.
active voice. Formula: helping verb plus not plus subject plus first form of the verb plus object plus question mark. Do not they use mobile? Does not sight fly the kite? Passive voice. Helping verb plus not plus object plus third form of the verb plus by plus subject plus question mark. Is not mobile used by them? Is not the kite flown by Said? As we know that they have the same translation in Urdu, negative interrogative formal and informal have the same translation in Urdu, but they are various on the base of their written and spoken. So this was our first tense in active and passive voice, and inshallah you will get the new tense, the past indefinite tense, and we shall practice them in same way in active and passive voice, and do the practice at home also. And if you find out any kind of a difficulty, so you can ask the question or whatever your confusions are, you can ask us. Okay, but try to do the practice on the daily basis. Till the next topic, take care of yourself. Allah Hafiz.